Job. Salary. ओह, सो आप भी जॉब पर सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं सैलरी ब्रैकेट को देखकर, या आपको पता नहीं है कि सैलरी निगोशिएट कैसे करते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू निगोशिएट अ सैलरी इफेक्टिवली. लेट्स जंप ऑन टू दिस वीडियो. Okay, so let's just jump on to the topic. Now, I'm gonna, discuss this the sensitive topic like the why salary negotiation is important and what is actually the salary negotiation is. Because it is a most underrated topic, specifically in countries like Pakistan, where people just, accept the job or reject the job based on salary bracket. And even though they like mention in the job description about the salary bracket, but they won't consider the other perspective as well when they jump onto the salary negotiation part. So now, what is actually the salary negotiation is? It is basically the mutually satisfactory package between a job candidate and an employer. Now, if you consider in perspective of an employer, then employer offer you a salary that based on their budget and based on their requirement. But this salary negotiation is more important concept in terms of employee or the interviewee, because their future, their bills, their inflow outflow based on this salary. So I think, and not, it's not only my thinking, the based on several researchers, that this topic is most, sensitive in terms of employee. Because, if I'm talking about employer, right now, I'm also running a firm. Employer has, uh, even though maybe I'm wrong, employer has more other options. But when you talk about employee, their salary is running their family, their day-to-day expenditures and all of this stuff. So if you talk about the importance of salary negotiation, it can increase initial salary by an average of 5 to 10% if if you're good at negotiation, so you maybe jump onto like 5 to 10%. And over a career, failure to negotiate could cost a typical employee between 1 million to 1.5 billion in lost earning. There's a, Linda's Bob Core research on negotiation. Okay, so let's jump on to other. Now there are, few perspective when you talk about the salary negotiation, and what are some like the elements when you jump onto the salary negotiation. When I was younger, and what I did, I never ever did any research evaluating my market value. But now, even though after 5 to 6 years, I realized that I did a big mistake. Usually, यूजुअली क्या होता है कि हम इस पार्ट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, बट ये अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं है. इस मार्केट रिसर्च को हमें सीरियसली लेना पड़ता है. So the first step is when pass the interview phase, and finally you are sitting before your employer, before your prospective employer or the HR manager. So the first thing, you need to understand your market value. And it's important to conduct thorough market research to understand the standard pay for your position. For example, if I'm talking about myself, I'm, working as a financial analyst. I was working as a financial analyst. So if I, put my example before you,
So when I got the job or got the offer letter, so I usually did a market research about, okay, what my counterparties or the same type of company or the same type of job, but they are paying to the financial analysis or the financial analytical jobs. So इसमें क्या करना पड़ता है, आप अपनी एक लिस्ट बनाए, अपनी अचीवमेंट की लिस्ट बनाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो एंटरप्रेन्योर सक्सेस, आई एम रनिंग 2 ब्रांड्स, मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है, आई एम अ पावर बीआई डेवलपर एंड 7 years of finance expertise. So based on this skill, I try to come up with my market value, and this is not something like a joke. यूजुअली क्या होता है कि हम इन चीजों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है, ऐसा करने की क्यों जरूरत है. ये करने की इसलिए जरूरत है ताकि आपको पता चले कि मैं निगोशिएशन कर रहा हूं तो उसके बैक एंड पे क्या है, मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, और मुझे कब यस करना है कब नो करना है. ऐसा ना हो कि वो आपको अच्छी ऑफर दे रहे हो आप नो करके आ जाएं, और ऐसा भी ना हो कि वो आपको इतनी अच्छी ऑफर नहीं दे रहे हैं एज कंपेयर टू मार्केट. So, but you didn't do any market research, so you took it that job and ended with a regret. So remember, negotiation is not just about the salary figure, it's also about your value and what you bring to the company. So this will, give us a brief about your evaluating market value. Now, after this, there's the most important, you know, uh, topic and part which in my perspective is most important when you jump onto the phase of salary negotiation. It trusts in your skills and confidence. Now ये एक बहुत important part है कि जब तक आपको strong belief नहीं होगा अपनी personal abilities पे, अपनी expertise पे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, you won't be able to negotiate better. Because remember one thing, there's a two parties. One is one is an interviewer, and the second is interviewee. Consider it like a war. And everyone wants to win the war. So you have to fill your weapon. And your main weapon is your skills, your abilities, and your strong belief on that abilities. So the first point is strong belief in personal abilities and expertise. ट्रस्ट करें अपनी कैपेबिलिटीज पे, स्ट्रेंथ्स पे, एंड आफ्टर दिस एक्नॉलेज करें अपनी अचीवमेंट को. समटाइम्स क्या होता है, वी फील शाय, पता नहीं मैं ये कर सकूंगा कि नहीं. देखें, अगर आप इफ और बट की जंग में फंस गए तो फिर आप निगोसिएशन वाले पार्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ऑलवेज एक्नॉलेज योर अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस एंड embrace the challenges as opportunities for growth and maintain a positive outlook on your abilities. एक रिसर्च है, इज लाइक द स्ट्रॉन्ग बिलीफ कैन इनहेंस सैलरी नेगोशिएशन सक्सेस बाय अप टू 90%. अगर आपको अपनी स्किल्स पे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, so you maybe end up like 90% of success ratio, like you got your desired salary. इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और देना चाहूंगा. स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि मेरी वर्थ क्या है. एक बात हमेशा याद रखनी है, जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा. सो पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखें. आपको अगर काम आता है तो उसकी इज्जत पहले खुद करें, उसको मनवाएं. हमारा इशू क्या है कि हमें अपने काम को मनवाना नहीं आता. हमें काम सारे आते हैं लेकिन हमें मनवाना नहीं आता. एक दफा जब हम इस फेज में आ जाएंगे और हमें अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट आ जाएगा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, इट विल बी मोर feasible for us to fight for right or desired salary package. Okay, now jump on to some negotiation techniques. Now this is pretty much based on my personal experience, and maybe I'm wrong, but these are something like maybe you familiar with this. Now when you jump onto the salary negotiation, always try to negotiate
start your negotiation at a higher initial strategy or the higher initial salary expectation to influence the negotiation in your favor. ये पॉइंट कभी देखें, इस पॉइंट को आप डिफेंड उस वक्त कर सकते हैं व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन योर एक्सपर्टीज एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन योर एक्सपीरियंस। अदरवाइज देखें, आपके जो सामने जो ऑपोजिट चेयर पे जो इंसान बैठा हुआ है, दे हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज, तो वो इजीली आपको जज कर लेगा। मुझे इंटरव्यू लेते हुए काफी टाइम हो गए, बड़ा इजीली आई कैन फिगर इट आउट के ओके, जो नेक्स्ट पर्सन है ये हायर इनिशियल डिमांड कर रहा है बेस्ड ऑन व्हाट। इफ यू नो दिस आंसर व्हाट, तो आप अच्छी तरह से निगोशिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेंज they are offering you between 80 to 1. Now, let me, don't bragging this about employer always trying to push you to the lower, toward the lower end, और एम्प्लॉय कहेगा नो, आई एम गेटिंग टू द हायर। सो उस हायर वन को डिफेंड करने के लिए यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अगेन यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर परफॉर्मेंस, इन योर एक्सपर्टीज। अदरवाइज आप चाहे इनिशियल सैलरी जो मर्जी कहें, आप उसी लोअर रेंज में आके एंड अप होंगे, बिकॉज यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आपको कहीं ना कहीं शक पड़ा होगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और इट टोटली बेस्ड अपॉन योर एक्सपर्टीज। अगर आपकी ये देखें ना, अगर आपकी एक्सपर्टीज वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप अच्छी तरह उसको डिफेंड कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है बैटना, which stand for best alternative to a negotiated agreement. Is something like a plan B. Okay, अगर plan A नहीं चला, for example आपने कहा I need 90,000, और you didn't defend that pretty much well. So now what is the plan B? The plan B may be something like you during the interview you come up with the point, okay, I मुझे तो एक और opportunity भी है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। तो प्लान बी में फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्यूरिंग इंटरव्यू किसी का स्टक हो जाते हैं और यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, तो यूज इट एज अ प्लान बी। उस प्लान बी में क्या होगा कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, तो आप थोड़ा सा मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आप ज्यादा अच्छी तरह से निगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, निगोशिएशन का हरगिज मतलब ये नहीं है, एरोगेंसी नहीं है। निगोशिएशन का मतलब ये है फाइट फॉर योर ट्रू राइट, एंड ट्रू राइट क्या है? बेस्ड अपॉन योर एक्सपर्टीज एंड योर एक्सपीरियंस। तो अपने ट्रू राइट के लिए खड़े, ना कि किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, उसके लिए नहीं, अपने ट्रू राइट पर बेस्ड अपॉन योर एक्सपर्टीज, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। And now, 73% of employer expect job candidate to negotiate salaries, yet many employees hesitate to engage in. क्यों? अब क्यों hesitate कर रहे होते हैं? Because they don't know how to do this. उनके लिए ये बहुत एक अजीब सा टॉपिक है कि लाइक निगोशिएशन हम कैसे कर सकते हैं। सो निगोशिएशन करें, इससे आप ही की बेहतरी है। And there's a research, surprisingly 55% of employees choose not to seek salary raises, often due to a fear or lack of knowledge on how to negotiate effectively. तो ये भी एक रिसर्च है जिस NYU, like 55% employees choose ही नहीं करते कि हम negotiation part में जाएं, वो HR के साथ उस पर negotiation ही नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखें, there is a difference between healthy argument and a negative argument. हेल्थी और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट में आप पॉजिटिव वे में दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में आप दूसरे को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। आपने नेगेटिव वे में नहीं जाना, यू मस्ट बी इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव रोड पे चलना। व्हेन यू ड्राइव योर कार इन अ पॉजिटिव वे, सो आप डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस, व्हाट आर द की टेकअवेज? सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को रिसर्च करना है और अपनी वर्थ को आपने लाजमी जानना है। देखें, कभी भी अपनी वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि दे आर ऑफरिंग मी अ लोअर वेज, तो
if you don't have any other issue, you simply turn this opportunity down. Because पता है क्या होगा, आपने तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आपके आगे आने वाले जो आप ही के जितने कैपेबल के होंगे उनके लिए भी मुश्किलात आ जाएंगी. एक एग्जाम्पल जब हम सेट कर देते हैं तो इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट ऑन अदर्स. देन स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन टैक्टिक्स सीखें. इस टॉपिक को बिल्कुल लाइट मत लें. आपके शुरू के कैरियर में, जब मैं भी शुरू अपना कैरियर किया तो मैं इस टॉपिक को बहुत लाइट लेता था. क्या यार जाके बात कर लेंगे. नो, प्रॉपर रिसर्च करें ताकि आपके पास पॉइंट्स हो और आप जाके अंदर बोल सकें. एंड देन थर्ड, अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी एक्सपर्टीज पे आपको बिलीव होना चाहिए. एंड देन रिफाइन योर नेगोशिएशन स्किल थ्रू प्रैक्टिस एंड फीडबैक. अपनी निगोशिएशन को, और इसमें मैं एक और वर्ड ऐड करूंगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, द वे यू कम्युनिकेट विद अदर्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें. अपने पास ऑथेंटिक पॉइंट्स इकट्ठे करें ताकि उनके जरिए आप बोलें. ये बात याद रखें, स्पेसिफिक जो बंदा आर्ग्यूमेंट करता है, दे विल लीड इवेंचुअली अ सक्सेस. जो आए बाएं शाये irrelevant arguments करता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता. So refine your negotiation skills through practice and feedback. So this is the conclusion and key takeaways of this presentation. Hope you like this video, and based on these strategies, in your next job you will be able to negotiate well and get your desired salary. So best wishes for your future. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं. ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.